Hi guys, Namaste. Welcome back to AnkiNish Creations. So in today's video, we are going to be painting on a cushion cover. I got this plain pastel blue cushion cover from Ikea. I got it very like बहुत महीनों पहले लिया था, but finally we are painting on it. So, and before getting started with this video, I wanted to give a shout out to one of your comments. So today we are going to give shout out to Nisha Hanif. I'm sorry if I'm pronouncing it wrong, but I really love reading your comment, Nisha. Thank you for commenting on each and every video of mine. और मुझे आपका comment पढ़ के हमेशा एक बड़ी सी smile आ जाती है मेरे face पे. So thank you so much for supporting and motivating me to follow my passion. Now let's get started with this video. So this is the cushion cover on which I'm painting, and I'm folding it in half to get the center from this side, and then I'll fold it from another side to get the center from that side, so that हमें वो एक plus type का मिल जाएगा, and we'll get the proper center of the cushion cover like this. Now I'm using my compass to make some circles on this cushion cover. तो जब मैं ये draw कर रही थी, I did not had any idea कि मैं क्या design draw करने वाली हूँ, या मैं क्या colors, या मैं कितनी बड़ी design draw करने वाली हूँ. तो मैंने बस randomly थोड़े से circles draw किए, and then I started from the center to start painting. पर उससे पहले I'm inserting this cardstock paper inside the cushion cover ताकि paint दूसरी side leak ना हो. And these are the colors I'm going to use: orange, gold, neon yellow, neon pink, and some blue, yellow, and black fabric paint for on this cushion cover. So starting with this brush, now let's start painting. तो सबसे पहले मैं center में yellow color paint कर रही हूँ. मुझे नहीं पता मैं क्या color combination use करने वाली हूँ at this point. So कभी कभी अच्छा रहता है if you don't have any plan, just start painting and choose gradually choose करो कि कौन सा कलर आपको पेंट करना है. So then I decided to go on with blue paint. तो जो मैंने कलर पैलेट दिखाया था कि these are the paints I'm going to use, वो मैंने कुशन कवर पेंट ख़त्म करने के बाद वो शूट किया था, बट आपको मैं पहले दिखा रही हूँ so that you have an idea कि मैं कौन से सारे कलर्स यूज़ करने वाली हूँ. So yeah, now enjoy painting with me on this cushion cover. So after painting in all the circles I've drawn, I'm drawing another smaller circle inside the first yellow circle, और उसके बाद मैं कुछ designs draw कर रही हूँ. And then I'll paint in this design. उसके बाद मैं और designs draw करूँगी. And वैसे ही मैं gradually करते जा रही हूँ. I'm not drawing पूरी design all at once. मैं draw कर रही हूँ, paint कर रही हूँ, draw कर रही हूँ, paint कर रही हूँ. So you can choose the process which suits you. If you want to do the same design, then you have the final look. So you can draw first completely and then start painting. फैब्रिक पे पेंट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंपेयर टू पेपर एंड कैनवस. सो इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव इट सम टाइम एंड स्लोली यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट. नाउ आफ्टर पेंटिंग द ऑरेंज पेंट इन दिस फ्लावर, आई डिसाइडेड टू डू सम डॉट्स इन अराउंड दिस फ्लावर विद गोल्ड पेंट. सो एज आई सेड कि फैब्रिक पे पेंट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वैसे ही फैब्रिक पे डॉट्स बनाना भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है. बट अगर आपने जैसे यहाँ पे मैंने पहले से एक कोई बेस कलर कर रखा है, उसके ऊपर डॉट्स बनाना थोड़ा सा इजी होता है कंपेयर टू डायरेक्टली फैब्रिक पे डॉट्स बनाना. तो पहले से अगर कोई बेस लेयर पेंट करा है और उस पर डॉट्स बनाते हैं तो डॉट्स के थोड़े से परफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. नाउ अगेन आई हैव ड्रॉन दिस सम डिज़ाइन ऑन ब्लू कलर एंड आई हैव चोजन नियॉन पिंक कलर टू पेंट इन दिस डिज़ाइन. तो फैब्रिक पे ना कुछ कलर्स थोड़ा सा डिफरेंट भी बिहेव करते हैं. लाइक दिस नियॉन पिंक वॉज नॉट गेटिंग स्मूथ एट ऑल ऑन दिस फैब्रिक. उसमें थोड़ा सा टेक्सचर रह ही जा रहा था. सो आई डिसाइडेड लेट्स लीव दिस टेक्सचर, इट्स लुकिंग गुड, एंड क्या पता एंड में और भी अच्छा लगने लग जाए. सो डोंट वरी अगर आप कुछ पेंट कर रहे हो, कुछ नया ट्राई कर रहे हो एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर प्लान, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एट द एंड शायद अच्छा ही लगेगा. मोस्टली 99% टाइम चीज़ें अच्छी ही टर्न आउट होती है. सो या, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एन्जॉय द प्रोसेस एज आई ऑलवेज से. Now I'm drawing some more design between this petals I have drawn earlier, और उसमें भी I'll paint and I'll repeat this process of drawing and painting all through the cushion cover until I'm satisfied with my design. So enjoy the process of painting this mandal design on this cushion cover.
Now here I am using this dark blue paint to paint on this petals of cushion cover. I know I forgot to mention this paint at the beginning where I was showing all the paints I have used in this cushion cover. So this I missed, sorry. Next I have drawn more petals on this last blue painted area, and now I am painting it completely orange. While editing this video I realized कि मुझे थोड़ा सा येलो पार्ट रहने देना चाहिए था, पूरा येलो छुप जाता है. आई थिंक इसीलिए मैंने उसके बाद वापस येलो पेंट चूज किया था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द येलो गॉट कवर्ड विद सम और अदर पेंट. So yeah, now I'm painting this petals orange, and I'm using two sizes of brush, one flat brush and one small brush to get in all the corners of the design. I will also do another layer of orange paint on this one once it is dried to make it more opaque. Next I am marking 5 centimeters from the edge of this blue paint between orange petals, तो ताकि मैं एक और पेटल ड्रॉ कर सकूँ, एंड आई हैव सम गाइडलाइन ताकि वो सारी पेटल्स ऑलमोस्ट सेम हाइट की हो. एंड फैब्रिक पे ऑब्वियसली ड्रॉ करते समय मिस्टेक्स भी बहुत होती है एंड इट्स हार्ड टू इरेज, बट मैं एक बड़ा सा ब्रश रखती हूँ, क्लीन ब्रश, टू रिमूव ऑल द डस्ट एंड इरेजर के पार्टिकल सो दैट दे डोंट कम बिटवीन व्हेन वी पेंट इट. So yeah, it's okay to make mistakes, you can erase it and always rectify it. Now I have drawn all these petals and I'm going to be placing more cardstock paper inside my cushion cover ताकि पूरा area cushion cover का seal हो जाए, so that no paint gets on other side of the cushion cover. Now I'm again using neon yellow paint to color in this petals. As I said earlier, yellow पूरा छुप गया था जो मैंने पहले पेंट किया था, so I decided to do more yellow on this petals. And this is how my mandal design is looking till now. अब बहुत late हो गया था रात में, so I decided to continue it next day. So good night and see you next day. एंड वेलकम टू द ग्लूमी डे इन आयरलैंड. तो इतना ज़्यादा डार्क हो रहा था ना कि मुझे दिन में भी पूरा लैम्प चला के और रूम की लाइट चला के आई हैड टू फिल्म. सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस बॉर्डर ऑन माई डिज़ाइन से आई वॉज सेटिस्फाइड. आई डिडंट वांटेड टू डू एनी मोर डिज़ाइन ऑन द कवर, और बट मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा कंप्लीट लुक देने के लिए आई थिंक द बॉर्डर वुड लुक गुड, बट आई डिड नॉट वांटेड टू डू अ सिंपल बॉर्डर. सो मैंने सोचा कि ये रनिंग स्टिच टाइप की बॉर्डर करती हूँ. सो आई यूज्ड थिन ब्रश एंड ब्लैक फैब्रिक पेंट टू डू दिस काइंड ऑफ रनिंग स्टिच टाइप की बॉर्डर, dash dash wali all around the design, and it looks so pretty after doing it on the yellow petals. So अंदर की डिज़ाइन पे भी करते हैं, and I think this is the last step. I don't know उसके बाद मैंने क्या किया या ख़त्म करा है यहाँ पे इस कुशन कवर को. जब वीडियो शूटिंग और वॉइस ओवर करने में इतना गैप आता है ना, तब ऐसे ही होता है. कुछ याद नहीं रहता है. Now I think it's the final part. I'm adding some more dots around my design to finish the look. So here I'm adding some gold dots, and I think uske baad I'll add some neon pink dots around the yellow petals, and then we'll be done with our cushion cover design. I think it looks so pretty and so colorful and so vibrant. बहुत ही मस्त बनी है, and this was my first mandal painting type की design, not dot mandal or not mandal drawing, proper mandal painting. And this is how it looks in our living room. Let me know your thoughts in the comment section below. Now enjoy the outro or final shots of the design. So that's it for this video. I really hope you liked this cushion cover painting video, and while painting this I realized कि ये मेरी first proper like mandal painting type of art मैंने कभी करी है. Like I have done mandal drawing वाली art बहुत बार, dot mandal वाली art बहुत बार, but I have never done like proper mandal painting wali art. So this was the first time me doing it, and that too on a cushion cover, and I really love how this one looks at the end.
So let me know your thoughts in the comment section below, and like this video if you like it. That really helps to grow the channel and also improve the rating of the video. So like it if you enjoyed it, and comment down below to get a shout out in my next video, and I'll see you soon. Bye. Love being creative. Subscribe जरूर कर देना. Okay. Bye bye.